नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद सिंह पेमावत, हेड ऑफ करियर डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेट रिलेशंस गीतांजलि ग्रुप उदयपुर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वी ऑलवेज कम विद द वीडियोस रिलेटेड टू द करियर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट। In the same series, today we are with one of our very good student, Lokendra Nama from MBA 2025 batch. He has received multiple offers through campus placement in the multiple organizations like Berger Paints as well as Odoin and Index Capital. He has the stream Finance and Marketing in MBA and is one of the good students. That's why we are sitting all together with one of our current batch students. So welcome Lokendra. Thank you, sir. And we just wanted to know, and the viewer will also wanted to know that something about Lokendra Nama, so that you can describe more about you, what your achievements, how you have achieved this kind of milestone, everything about it. Right. Thank you, sir, for this opportunity to be here. So to give a brief about myself, I have done my BCom from Mohalla Sakhadia. Obviously, I'm doing my MBA from Gitanjali Institute of Technical Studies. I have worked with Animal Aid Charitable Trust as Public Relations Officer, and as a part of my internship, I've worked with Government of Gujarat Student Startup and Innovation Hub iHub, and obviously I've received many offers from like Berger, as you said, Berger Paints, Odoin, and Index, and many other Canadian and Australian mortgage firms. What I have seen is the practical knowledge, the practical aspect happens in working will and is going to help you in the MBA part of it and your experience career part of it. So this was me, sir. Okay, very nice. It means your opinion, if any MBA students who has done more internship, who has done more projects, more kind of live exposures in the format of live projects, Right. it really helps when they are sitting for an interview. Obviously, sir. As we say, there is a way more difference in theory and practical aspect of anything. You're reading something and you're actually applying that thing in practical life. Obviously, you can't read a book how to swim and go there in water and be a very good swimmer. Okay. So, trying to do projects, taking internship, taking part in college projects or any other research paper you can do is going to help you in your career and will give you a perspective to how to achieve things and how things is going to work or is working in the real life. True, definitely. When I have already given the detail about you that you have done MBA in Finance and Marketing. Right. And when somebody has done MBA in Finance, we normally see the competition is with the chartered accountant, the company secretary kind of profile. Right. So what do you really feel a MBA finance student, what they must know when they are sitting for any kind of finance and accounting job, or what basically they have to have a knowledge so that they can perform better in the job interviews related to the finance and accounting? So the thing is, CA, CPM, any other CFA, any other certificate is a core study and core thorough study of something. If we talk about CA, it's going to talk about audit, it's going to talk about maintaining books, it's going to talk about ethics. Okay. When we talk about management, when we talk about MBA, जैसे MBA में हम आके मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो these are both same thing at the same time, both different thing. CA में हम जो सारी accounts maintain करने की बात करेंगे, उनको audit करने की बात करें, ethics की बात करेंगे. Management में we think about it, we do things around management perspective. हमें ये नहीं पढ़ा जाएगा कि जनरल एंट्री क्या करनी है, हमें ये पढ़ा जाएगा कि अगर जनरल एंट्री मेंटेन हो रही है, कहाँ तक हो रही है, कब तक हो रही है, कहाँ तक होनी है. दोनों के अलग पर्सपेक्टिव है, दोनों ही अलग चीज़ें हैं. बट एज ए MBA स्टूडेंट, MBA गोइंग स्टूडेंट, मैं अगर मेरे फेलो मेट्स को या फिर मेरे जूनियर्स को बोलूँगा कि आपको क्या करना चाहिए टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट, टू अंडरस्टैंड थिंग इन द MBA एंड स्पेशली फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट फील्ड, आई वुड से अपना बेसिक, अपना जो फाउंडेशन है वो मत भूलो. दैट्स गोइंग टू बी योर 11th 12th बेसिक अकाउंटिंग टर्म. अगर मैं आपको बोलूँ कि सेल्स की एंट्री करनी, यू हैव टू बी वेरी प्रोफिशिएंट इन दैट. जनरल आप मेंटेन कर सको, आप जो भी ट्रायल बैलेंस है वहां तक आप जा सको इजीली. उसके बाद आता है P&L, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज. आपको तीनों को कनेक्ट करना आना चाहिए. अगर आप बुकिश टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो आपको तीनों बनाना आना चाहिए. Right. बुकिश से आप बाहर जाएंगे, आप किसी बीट एनीवन, लाइक रिसेंटली आई एम गोइंग थ्रू दैट PI इंडस्ट्री, डीमार्ट की बैलेंस शीट. Right.
आई हैव टू नो कि बैलेंस शीट में से अगर कोई चीज निकली है तो सॉरी P&L में से कोई चीज निकली है तो बैलेंस शीट में जाएगी, दोनों का मिक्सअप होके वो कैश फ्लोज में जाएगा, जो भी तीनों आगे बी इट ऑपरेशंस, एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स, वो वहां पे जाएगी। कैसे क्या रिफ्लेक्ट करेगा, वो कैसे बिजनेस को इफेक्ट करेगा। उससे आपको एक और चीज पता पड़ेगी कि इतनी सारी चीजें हम उसको एनालाइज कैसे करें, हम उसको देखें कैसे, कंपनी अच्छी है बुरी है क्या है, उससे आपको डिराइव होगा कि आप रेशियोज पढ़ सकते हैं। राइट। आपको 11th 12th में पढ़े होंगे, बीकॉम अगर आप करें, बीबीए कर रहे हैं, आपको रेशियोज तब पढ़ाएंगे, आप एमबीए में आएंगे तब पढ़ाएंगे। बात आती है हम कितना उस पर ध्यान दे रहे हैं। अनटिल अनलेस आपको काम है आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। मैं एम्फेसाइज करूंगा, इंसिस्ट करूंगा आप पे कि आप रेशियोज पे ध्यान दीजिए। बेसिक चीजें, बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, आपको सिर्फ डिवाइड करना है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को, बट जो वैल्यूज आ रही है वो आपको बहुत इफेक्ट कर सकती है। ये 3 बहुत बेसिक चीजें, अगर हम इसमें थोड़ा सा एडवांस और इंटरमीडिएट जाएं तो हो सकता है कि आपको ये सब आता है, आप इसको यूज कैसे करेंगे। राइट। फिर बात आती है फाइनेंशियल मॉडलिंग्स की, और फिर बात आती है एक्सेल्स की। मैं बताऊं एज एन एमबीए स्टूडेंट, आपको फाइनेंशियल मॉडल बनाना आना चाहिए, बी इट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, कंपनी के लिए या आप इंडिविजुअल के लिए। If you are MBA finance, then you should know how it can be used in the organization. बिल्कुल, कंपनी आपको एक कचरा लाके दे देगी, आपको उसको सॉर्ट करना है, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग इज द वे। आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग आना चाहिए तो आप एक स्ट्रक्चर अपनी तरीके से बना सको। आज आप फाइनेंशियल मॉडलिंग बनाओगे, आपका पर्सपेक्टिव अलग होगा, मेरा अलग होगा, बट हम दोनों उससे काम निकाल सकते हैं। तो आई वुड इंसिस्ट, अगर आपको ये सारी बेसिक 3 चीजें आती है, अकाउंट्स हो गया 11th 12th की, बीकॉम की, रेशियोज हो गए, बैलेंस शीट पढ़ना, उनको थरोली बनाना आ गया, उसके बाद में आई वुड इंसिस्ट कि आप फाइनेंशियल मॉडल पे फोकस करो। आप फाइनेंशियल मॉडल पे फोकस करोगे तो ऑब्वियसली आप एक्सेल पे बनाओगे, आप एक्सेल बनाओगे तो आपको एक्सेल में होना ही चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री हो गई, एक्सेल सब यूज करते हैं, वो एक लिमिट के बाद खत्म भी हो जाएगा तो दूसरी चीज यूज करेंगे, लेकिन एक्सेल तो यूज करते हैं। तो दीज आर द 5 मेजर थिंग। फर्स्ट वन वाज बेसिक अकाउंटिंग, second one was reading thoroughly the balance sheet, the financial statements, third one is the ratios, fourth one is financial modeling, and the fifth one is Excel. Very good suggestions by Lokendra Nama, because we normally see, and I have also taken many interviews of MBA finance students especially. Right. I always ask the basic questions: what is the difference between accounting and finance, assets and liabilities? Many of the students cannot give the answer of these basic questions. Right. So if you have to go for these kind of financial areas, then you should have a thorough knowledge about your basic concept. And if you have a good concept, easily you can do whatever you want to do. So that is really great suggestion by Lokendra, and definitely I want to tell to the students that you have to focus on your basic concepts if you really want to go for core financial sectors. I just wanted to ask one more thing. What, in your opinion, what companies see when the interviewer taking your interview of any MBA student, what basically they want to see in a student so that they can give them a selection in a better way? Right. What is your opinion? 2 to 3 points. What do you feel? What interviewers see in the candidates? I would, as जो मेरा experience है, as I've experienced it, I would try to break this myth कि they want to see your perspective, how you react when they are going to ask. This is one aspect of it. This I would say 20 to 25%. But if you are sitting in a technical round, if I say as a finance lawyer, obviously I am going to talk more about finance. But if someone told me you have a finance technical round, obviously I want to know these basic things. I want to know, as you said, the students, the people don't know basic things, assets and liability. Right. So बात अगर technical round की आती है, तो you have to know क्या role है, उसके around क्या हो सकता है. What basic possibilities are related to that specific role. Right. You just have to connect the dots. Right. As I said, P&L से balance sheet से cash flows. You are connecting dots. आप तीनों मिला के, this is just an example. आप इंटरव्यू में बैठ रहे, फर्स्ट थिंग रोल क्या है, इन्वेस्टमेंट्स का रोल है, एज आई सेड फाइनेंशियल मॉडलिंग, यू हैव टू नो द नो हाउस निटी-ग्रिटीज ऑफ समथिंग कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, क्या चीजें लग रही है. कोई और रोल है अकाउंट्स का, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आनी चाहिए, आपको अकाउंट्स मेंटेन करने आनी चाहिए, वाउचर्स क्या है, वाउचर कैसे बनते हैं, किससे अप्रूवल लेना है, कहाँ पैसा जाना है, ये सारी चीजें बेसिक आना चाहिए. राइट. बेसिक कंसेप्ट हैज टू बी गुड. वेरी व्हाट एल्स अपार्ट फ्रॉम द बेसिक कंसेप्ट? बेसिक कंसेप्ट से अलावा एक पर्सपेक्टिव वो भी आता है कि आर यू गो गेटर और नॉट. दे विल ट्राई टू क्रैक यू कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई तो आप क्या करोगे, डिफिकल्ट सिचुएशन हाउ यू विल रिएक्ट. राइट.
मैंने एक इंटरव्यू दिया, मैं इंटर्नशिप में काम कर रहा था, उन्होंने पूछा था इंटरव्यू में कि हम 15-15 घंटे 16-16 घंटे बैठ के काम करते हैं, तो आप बैठ के करोगे क्या? मेरा जो फर्स्ट आंसर था वो यह था कि सर आई हैव डन माय इंटर्नशिप, आई एम अ गो गेटर, मेरे को पता है अगर काम होगा तो आई कैन साइड असाइड सम थिंग्स और मैं काम पे फोकस करूंगा, बिकॉज आई नो अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उसकी ड्यू डेट है, तो मैं वो करने पे एम्फेसाइज करूंगा, खुद को करूंगा और मेरे टीममेट्स जो भी हैं उनको करूंगा कि अपन लेट्स जस्ट डू दिस एंड लेट्स गेट ओवर विद इट. We normally see students are saying, "Sir, I cannot go for that kind of distance locations, Right. as well as long hours I cannot work." So if you are really doing MBA, if you really want to grow yourself in your career, if you want to achieve the pinnacle, achieve the success, then you have to be go-getter. Whatever is being asked to you, you have to give a positive response. You have to ready for the long hours, because in the organization you have to do it. Right. So it is really good, Lokendra, for these kind of suggestions. At the end, what you want to say in a single word to your juniors, to any MBA students who will see your videos, Right. because definitely it is giving the benefit to many of them. Right. So what is your last word or the sentence to all those MBA students who are doing MBA in finance, marketing, HR, production, IT, in any areas, from any colleges, Right. all across the country? I would say if you are sitting in an interview for a company, they do, अगर वो आपके कैंपस में आपके कॉलेज में आए, they do want to select you. Right. Just don't get hesitate. Be confident. Just know, be confident. Just know who you are. Just know your concept. Just know your thing. They are going to take you to their place. You are going to work with them. You are going to earn a living that, and you are going to make a career from Great, there. great. Thanks, Lokendra. Thank you so much, sir. Nice interacting Thank with you so you. much. It is really pleasure interacting with such a student like Lokendra, and he is from our current final year. He has not passed out yet from the college, so that is one of the biggest achievement. I am doing interview with one of our current ongoing student, and I think it is going to give benefit to all the students who is going to see the video. And with the same word, thanks a lot. Thank you again Thank you for so much, sir. joining us Thank you and so for much. giving the guidance to the student. Thank you so much. Thank you.